If you start working out with Praveen, I don't know how you guys manage it. That's what we get it. But if you manage it, he will for sure give you results. Hi, my name is Karan and I recently... Jay, warm welcome to the Bodyprocoach Transformation Series, and you've been amazingly inspirational for me. I've seen you around, and first of all, belated happy birthday. Thank you so much. There are a lot of times that we have to come and say that, take it easy, as in coaches, looking at the energy that you put in, looking at the speed that you have in the movement. So there are a lot of times that we have to come and say that, slow down a bit, take it easy a bit. What's your take on that? I'm like, well, how do you push yourself so much? There are most of them that you get blisters by doing the pull-ups. You can see that hands. Most of them is like it's all peeled out. Collarbones, yeah. So he hits a bar on the chest, pretty much on the cleans. So like it needs a psyche mindset. How do you keep the mindset on to come in every time here at about say 7 or 8 o'clock batch? Though you have a very hectic schedule of your studies, you're student also, right? Yeah. What are you studying right now? I'm studying mass media, masters in mass media. Lovely. And at the same time, you do quite a lot of shoots. You do a lot of commercials. Yeah. So ये सब आपकी दिमाग में क्या है? How do you do this? So initially when I started in 2017, my weight was extremely too much. Like I was 86 kilos, and now I have put down to 54 kilos. So back then it was really really difficult क्योंकि normal movements ही नहीं होते. 2-3 महीना तो सिर्फ normal movements सीखने में गए. बाद में I used to put on 5 kilos. वो भी होने लगे. बाद में मैंने 6 months तक सिर्फ 5 kilos डाला. And I was like, हो रहा है. And I used to do the workouts quickly. Yeah. So बाद में I mean everyone were like happy. They were like glad कि यार तू तो फटाफट ख़त्म कर रहा है. बाद में I used to feel कि मतलब अच्छा है फटाफट ख़त्म कर रहा हूँ, पर अगर मैं ज़्यादा वेट्स डालूँगा तो ज़्यादा टाइम जाएगा ज़रूर, पर मेरी बॉडी का जो एंड्योरेंस लेवल है, हार्ट रेट लेवल है, वो भी बढ़ेगा. और उससे क्या होगा, मेरा एंड्योरेंस लेवल बढ़ेगा तो फिर मैं और वेट्स उठा पाऊँगा और जल्दी मेरे मसल्स ग्रो होंगे. सो दैट्स वाई consistency matters. So it's not that you use just one weights, it's that you have to move up. You have to put your grounds higher and think like upwards and not just कि चलो ये है अभी इसमें ही करना है. So that's why I always put more weights and I be consistent enough to come at 7 a.m. in the morning, because earlier I used to come in the evening, but then I researched on Google and YouTube everywhere, and I even asked people. I got a lot of friends at 7 a.m. batch क्योंकि सब लोग बहुत enthusiastic कहते थे. And बाद में I researched that from morning 5 to 8 a.m. something, from morning 5 to 7 a.m. our testosterone levels are high and we get more energy to work out, which helps us to carry more weights, and उससे हमारा बॉडी स्ट्रेंथ एंड्योरेंस लेवल सब बढ़ता है. सो दैट हेल्प मी. तो उसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस क्विक होने लगा, तो रिजल्ट्स क्विक मिलने लगे. और फिर बाद में यही 7 AM रूटीन को मैंने हैबिट में कन्वर्ट कर दिया. एंड इट्स अ कोट लाइक फर्स्ट यू मेक द हैबिट एंड देन द हैबिट मेक्स यू. सो दैट्स हाउ इट हैपेंड. एंड मेरा रिजल्ट और सब जो भी मेरा इंजरी भी हो जाता था कभी कभी बीच बीच में, तो वो भी क्विक हो जाता था क्योंकि 7 AM हम लोग मॉर्निंग में आते हैं. सो एक हो जाता है. इसमें एक बेनिफिट पॉइंट ये है कि 7 AM to 8 AM तुमने 1 hour वर्कआउट कर लिया, बाद में फुल डे तुम फ्री हो. तो फुल डे आई कैन गो टू शूट, आई कैन गो टू एनीवेयर वेयर आई वांट टू गो. सो आई कैन कंप्लीट माई होल टास्क, होल रूटीन in 7 AM in the morning, and the whole rest of the day I am free for shooting and everything. Things to do, whatever you can do. That's amazing. Like I remember that meeting you, after the lockdown, and because as you said that 2017 is what you were exercising here. Then of course उसके बाद में थोड़ा lockdown हो गया. You were shooting in I think Gujarat somewhere. Bhopal में, and you took a long break.
And when I met you a few months back after the lockdown was finished or over, and you were like completely a fat guy with the complete tight muscles of flexors and everything. I'm like, you couldn't really create good and clean movements. But over, I think about, 4 or 5 months now? Yeah. You have completely changed yourself again. So what diet protocols that you implemented on yourself? या सो बैक व्हेन आई वाज इन भोपाल, सो भोपाल से पहले तो मैं यहाँ वर्कआउट करता था तो मैं बराबर लीन वीन हो गया था, मैं जो मेरा बॉडी गोल था वो मैंने अचीव कर रहे थे. बट बाद में जैसे ही मैं भोपाल गया वापस मैं मोटा हो गया वहाँ पर. नॉट मोटा बट आई वाज लाइक नॉट इवन स्लिम और ट्रिम, थिन भी नहीं था. But you had gained weight, आपने वजन बढ़ा रखा था. सो अगर तुम टी शर्ट पहनोगे तो दिखोगे नहीं तुम कि तुम मोटे हो, बट अगर तुम टी शर्ट निकालोगे तो तुम दिख जाओगे तुम मोटे. Exactly. बट आई वांटेड लाइक अ परफेक्ट लीन एब्स वाला स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर. सो वहाँ पर जिम्स बहुत कम है वहाँ पर. सो वहाँ पर जो भी एक दो छोटे छोटे जिम्स होते थे या मेरे जो हम लोग जहाँ रहते थे वहाँ पर जो जिम्स रहते थे वहाँ पर वेट्स लेके आई रिमेंबर्ड कि मैं मुंबई में यहाँ पर बॉडी प्रोकोच में कौन से लेवल ऑफ कौन से टाइप ऑफ वर्कआउट, जैसे मॉर्फ वर्कआउट हो गया 100 200 300 राउंड, फिर चिपर हो गया, वो सब मैं वहाँ करता था. सो उससे मुझे ऑफकोर्स अच्छा लगता था. बट सिंस द शूट हैपन्स कंटिन्यूसली, डेली लीव शो होता है तो उसमें तुम मंडे टू सैटरडे शूट करते हो. संडे में भी अगर मान छुट्टी मिल गई तो मिल गई, वरना नहीं मिलती. टाइम ही नहीं मिलता. तुम भले 7 बजे उठ के करो या 5 बजे उठ के करो, टाइम ही नहीं मिलता. बिकॉज कभी कभी 12 घंटे, कभी कभी 16 घंटे का भी शूट होता है, कभी नाइट शूट होता है. सो यू नीड प्रॉपर स्लीप एज वेल फॉर दैट. सो आई कुडंट मैनेज माई वर्कआउट रूटीन बैक देन. बट आई यूज टू डू कार्डियो एंड ऑल. बट बाद में जैसे ही मैं यहाँ आया, लॉकडाउन हुआ, फिर लॉकडाउन जैसे ही खुला मैंने सीधा यहाँ पर ज्वाइन कर लिया. एंड 2 to 3 months में आई गेन्ड माई परफेक्ट बॉडी फिजिक. एंड दैट ओनली हैपेंड बिकॉज आई बिलीव इट्स बिकॉज ऑफ दिस जिम रूटीन एंड डाइट. Diet plays a major role, of course. We say that our body is, of course, made in the gym, but it is also made in the kitchen because 24 hours में से 23 hours हम तो जिम के बाहर भी रहते हैं. तो 1 घंटा हम लोग जिम में देते तो it is also important that 23 hours हम करते गए हैं. So मैं intermittent fasting करना शुरू कर दिया था. So like 12 to 14 hours I used to be on diet and my eating cap was 6 hours. So उसमें मैं जो भी ब्रेकफास्ट हो गया, थोड़ा बहुत लंच हो गया, वो करता था. It was also guided and helped by Maahek ma'am and Praveen sir. And since I am a vegetarian, so we have a lot of protein sources that we don't have. I mean, we have a lot of protein sources, but those are not complete protein sources. Like ये भी मुझे Maahek ma'am ने बोला कि like in vegetarian sources of protein are a lot, but they are not complete source of protein. Like dairy products are complete source of protein, जैसे whey protein हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीज़ें complete source of protein है. But so yeah, so the diet plays a major role. तो मैंने intermittent fasting किया. intermittent fasting से मुझे अच्छा लगा, fat loss हुआ. But then I have to grow my muscles also. I have to build my muscles. So उसके लिए I have to gain more protein rich food. तो intermittent fasting को मैंने थोड़ा कम कर दिया. I increase my time cap and अभी evening में मैं like 6 PM के पहले खा लेता हूँ और protein shake पी लेता हूँ. और I don't have creatine. I don't use steroids. I am perfectly in a vegetarian rich food source of protein guided by Maahek ma'am and Praveen sir. Correct. So yeah. Sounds amazing. I want to know more. See, what I always observe you as a person is that the mindset that you have. I think exercise सब करते हैं, but आपका जो mindset है, you know, आप कितने उम्र के हो वैसे अभी? I'm 21. It's just 21, you know, and you have been working. I think you're a child artist as far as acting concerned, right? आपने अपने 34 साल में कुछ शुरू की थी acting, right? No, 2004 में. Yes, when I was 4 years old. Yeah, मतलब वो when you're 4 years old, you started acting, right? So वहाँ से लेके, you know, keeping all these things, such a busy schedule, but still you make it to the gym. And you're a very disciplined person. I never seen you walking into the class late. So how do you manage? How do you schedule a day? Like होता है ना कि आपने पूरा महीने का schedule बना दिया या फिर एक हफ्ते का, एक दिन का, जैसे मैं करता हूँ. I already have a 1 week schedule. मुझे ये चीज़ें करना होता है. You know, I have got split workout twice a day kind of stuff. जो एक दिन का जो कल का schedule मैं एक दिन पहले करता हूँ. आप कैसे करते हो? मतलब how do you manage that so beautifully? Honestly, I don't I don't have a weekly plan कि आज मैं प्लान करूँगा कि अगली वीक में क्या करना है. बिकॉज मेरा शूट में तो यू नो दैट इट इज़ वेरी स्पॉन्टेनियसली. आज कॉल आया कि कल शूट है, बिकॉज एड्स में मोस्टली यही होता है. या समझो आज कॉल आया परसों शूट है, तो कल ड्रेस ट्रायल हो गया, डांस रिहर्सल्स हो गए, कोई भी रिहर्सल्स हो गया, तो ऐसे ही होता है हमारा. बट आई प्लान अ डे बिफोर, लाइक इन द नाइट. अभी समझो कल मेरा 9 बजे का, जैसे अभी कल ही मेरा 9 बजे का कॉल टाइम था. सो आई केम एट जिम एट 7 AM का बैच. 7 to 8 AM आई वर्कड आउट. 8 AM to 8:15 मैंने
मैंने यहीं पर चेंज वेंज करके नहा धो के यहीं पर मैंने सब रेडी होके यहीं से मैं निकल गया वहाँ पर सेट पे पहुँच गया और सुबह मैं खाना बना के गया था यहाँ पर आया था एंड जो कैरिंग द मील व्हिच मींस आई कैरी माय ओन मील, आई कुक माय ओन मील. क्या बात है. आई कुक माय ओन मील. इट इज वेरी ज़्यादा टाइम इट डजंट एक्चुअली डाइट फूड डजंट टेक मच टाइम. आई बिलीव 15 से 20 मिनट लगता है बनाने में, वो भी बहुत ज़्यादा हो गया अगर तुम रात को सब मतलब मैं रात को कुकर सब चढ़ा के रखता हूँ, सुबह सीटी बजा के खाना बना के हो गया मैं. क्या बात है. सच एन अमेजिंग थिंग. या एंड बात रही जिम की, मैं 15 मिनट इसीलिए पहले आता हूँ ताकि मेरा स्ट्रेचिंग एक आवर मैं वर्कआउट को दे रहा हूँ बट 15 मिनट मुझे स्ट्रेचिंग को भी देना है ताकि इंजरीज ना हो क्योंकि बीच में मुझे हुई थी और थैंकफुली वो इतनी बड़ी नहीं थी एंड मुझे प्रवीण सर ने गाइड किया था. वो इंजरी में कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था, सिर्फ छोटा सा मसल स्पैज़म था बट आई वॉज वेरी स्कैर्ड बिकॉज वेन एवर यू आर इन जिम एंड थोड़ा बहुत इंजरी हो जाता है घर वाले ऐसे डरा देते कि बहुत कुछ हो ना जाए कुछ होना जाए बाद में. बट व्हेन आई केम टू द जिम, महक मैम एंड प्रवीण सर दे वर लाइक स्क्वाट्स हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है, सो इट इज़ ऑल फाइन. जस्ट इंस्टेड ऑफ ऑफकोर्स फिजियोथेरेपी इज गुड but even we guys are gonna teach you the same exercises which will help heal your back. So वो हुआ, मैंने वो किया and perfectly 1 to 2 weeks में वो मेरा back heal हो गया and I was back to normal. That sounds so, amazing. Stretching is important. Do you know that सबके पीछे ना जैसे आपने बोला कि आप when you were in the 4 year or something you started acting and सबके पीछे एक strong person रहता है जो कि उनको आगे लेके जाते हैं. Any sports person that you take, any specifically actor that you take, उनको सिखाया जाता है या फिर उनको सपोर्ट किया जाता है. आपकी लाइफ में आपने डिसिप्लिन किससे सीखी? ऑनेस्टली मेरे लाइफ में मैंने डिसिप्लिन और जो मेरे पीछे जो इंसान है जिसने मुझे बचपन से मोटिवेट किया वो मेरी मॉम है एंड ऑफकोर्स मेरी बहन और मेरे डैड भी है बट माई मॉम. जब मैं 4 years का था सो ऑनेस्टली आई यूज्ड टू विन ऑल द कॉम्पिटिशन्स इन माई स्कूल लाइक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन हो गया, डांस कॉम्पिटिशन हो गया, सिंगिंग, एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन, ये सब. तो स्कूल में मैं जीतता था, फिर सोसाइटी में गणपति होता था तो गणपति में मैं जीतता था. सो बचपन में ये मैं 3-4 साल की उम्र की बात कर रहा हूँ तो उसमें मैं सब में जीता था. तो बहुत एनर्जेटिक और बहुत एंथुजियास्टिक था, बहुत एक्टिव था. तो मेरी मॉम को नेबर ने हमारे बोला कि आप इसको फिल्म इंडस्ट्री में ट्राई करो एंड बैक देन इन 2004 इतना क्रेज़ नहीं था जितना अभी है. correct, yeah. और कुछ मतलब उतना नहीं था. पहले तो ये सोचते थे कि इंडस्ट्री में डालना इज़ लाइक इट्स लाइक वेरी रिस्की क्योंकि क्या पता ये क्लिक होगा. 2004 में उतना कुछ नहीं था, अभी तो बहुत क्रेज़ है. तो मॉम ने बोला कि ठीक है. सो आई अप्लाइड फॉर ऑडिशंस, अ लॉट ऑफ ऑडिशंस. 2 साल देयर वाज नो वर्क, कुछ नहीं. मैं छोटा बच्चा स्कूल से बैग पहन के हाफ डे लेके वहीं पर खाना खा के वहीं से स्कूल बैग उठा के बस में जाके एंड आई यूज्ड टू लिव 2 hours far. I didn't used to live here. Used to live in ahead of Powai. तो वहाँ से 2 hours ट्रैवलिंग, तभी मेट्रो का काम चालू था तो बहुत ट्रैफिक होता था. सो 2 घंटा आना 2 घंटा जाना, फिर वहीं पर पढ़ाई, बस में पढ़ाई. सो वो सब करता था मैं. फिर वहाँ पर जाके पढ़ाई. पर 2 साल कुछ नहीं हुआ. सो आई वाज लाइक लेट्स क्विट बिकॉज हो नहीं रहा है. मॉम वाज लाइक लेट्स क्विट. बट जैसे ही हमने सोचा कि क्विट करते हैं तो हमको एक ऑडिशन आ गया. So since we had a habit of going to the auditions and trying our luck, keeping our hopes up and being positive. So since we had that habit, तो हम लोग वो बोला एक लास्ट शॉट, लेट्स गिव वन लास्ट शॉट एंड वी वेंट फॉर दैट ऑडिशन. इट वाज SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑडिशन एंड फॉर्चुनेटली आवर लक वाज गुड. सो हमको वो ऐड मिल गई एंड बाद में दैट्स व्हाट आई कॉन्स्टेंटली मेंशन्ड द वर्ड हैबिट बिकॉज सिंस आई हैड दैट हैबिट एंड दोज कॉन्स्टेंट एंथुसियाज्म टू गो, दैट हैबिट रिवॉर्डेड मी इन अ वे दैट आई गॉट दैट वन एड बिकॉज ऑफ विच आई गॉट अ लॉट ऑफ अदर एड्स. और फिर वो एड्स मिलते आई गॉट अ लॉट ऑफ अदर लाइक शोज, फिल्म्स एंड बाद में बूगी तभी बहुत फेमस था. में आया. फिर अंबर धारा शो सोनी चैनल के मैंने उसी दौरान वही एज ग्रुप में मैंने 5 शोज कर लिए. फिर बाद में मैंने फिल्म किया मैं कृष्णा विद जूही चावला, ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ. बाद में मुझे रशियन फिल्म मिली और बाद में अभी तक मैं करता हूं गॉड्स ग्रेस एंड माय मॉम. such a great thing. My mom was really disciplined with me. She never asked me to not quit मतलब पढ़ाई के लिए. She was always motivating or inspiring. मैं अगर शूट पर भी जाऊंगा so she would always help me कि ये इसमें बचपन में तो मम्मी ही सिखाती है. मम्मी आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स एंड मॉम्स आर आवर बेस्ट टीचर्स. तो वही सिखाती है. सो माय मॉम यूज्ड टू टीच मी बिकॉज आई स्पेंड मतलब मैं सुबह स्कूल में रहता था और शाम को शूट पे रहता था. तो और बाद में रात को पैकअप होता था, फिर वापस सुबह स्कूल में, शाम को सेम शेड्यूल गोज ऑन. एंड इट वाज नॉट अ चाइल्ड लेबर और अ चाइल्ड प्रेशर. आई लव्ड इट क्योंकि बचपन में मैं इतना एंथुसियास्टिक था. आई ऑलवेज थैंक माय मॉम बिकॉज मेरी मॉम ने मेरी एनर्जी को सही जगह पर डाला. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वो रियलाइजेशन काफ़ी ज़रूरी है. सो तभी बचपन में भी बहुत ऐसा सब होता था कि आप अपने बच्चे को चाइल्ड लेबर करवाते. No, actually होता है वैसे. होता है ऐसे. A lot of people give their opinions which they don't know probably like exactly क्या होता है सही. अभी बचपन में भी मैंने बहुत सारे अपने एथलीट्स भी देखे जो बचपन से ट्रेनिंग स्टार्ट. I'm telling you like if someone becomes an athlete they actually get that appropriate vision
by the age of 12, 13. I'm like, they're already Exactly. established in that, Right. you know, in that circle. Yeah. People get to know who are there. So- तभी जाके वो 18-20 साल में, you know, worldwide Yes. में, you know, get recognized. Right. It's a beautiful thing. Amazing, man. I'm like, so good to have you here with us in Bodyprocoach, and so happy to see the transformation. I remember talking to you several times. You constantly keep coming and asking about diet courage that you have, workout courage that you have. In between, I think when you switch that complete fats, or when you burn that complete fat, was the time that I think you were running also. Yeah, I saw you doing the class first. Ah. Then after that, you went on for running about 8 kilometers. I think that's the time that you got the maximum results out of which. Yeah, running is an extremely important part of a workout. I think that after, अच्छा running का भी ये है कि before workout थोड़ा सा कम, मतलब before CrossFit workout it is not, I mean, it is good. It's not like, but 1 as in hour, from the science point of view, you have something called ATP, adenosine Yeah. triphosphate. Right. So you get to use that when you're lifting more weights, and probably you should do cardio post the training. Post the training, That, right. you know, scientifically that is more appropriate or approachable. Yeah. Now, on the other hand, what's your fitness mantra? Like, you have something in your mind when it comes to fitness, or you want to tell your friends, you know, probably whomsoever is watching the video, tell them about that one thing that drives. Fitness is not easy, you know. Everybody is not fit, or, you know, a lot of people want to be fit, or everybody dreams to be fit, but sab hote nahi hai fit, because it's not an easy thing. It needs a lot of commitment, discipline, not only in the gym, but at the same. जैसे आपने बोला कि आप 1 घंटा जिम करते, but आपकी जो बाकी 23 घंटा आप you're outside the gym, and you want to really manage the complete eating pattern. Right. That's the time that you get to see that complete circle of things works out for you, and you start getting good results. What's your fitness mantra? So I think that people seek motivation to come in the gym, and they they watch videos, and they look at each other कि यार ये कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ. It is a good source of motivation. Motivating yourself. Yeah, it is a good source, but I believe for me, my motivation is within me, because when I look around, it is of course a great source of motivation. But I think that अगर मैं सामने आसपास के लोगों को देख के अगर ये सोचूंगा कि मैं उनमें से अलग कैसे हूँ, that itself will Gets you motivate. that lift. So your motivation is inside you, not on your YouTube videos or some Instagram reels you see of calisthenics or different kinds of workout. Even if you look at them, even if you just ask yourself that how are you different from others. So that's one thing. Motivation is within yourself. Second, consistency, discipline. Now these words seem like यार नहीं होता मुझसे, यार नहीं होता सुबह सुबह उठ के कौन होता है. A lot of you might have heard यार सुबह सुबह नहीं होता. So I don't even talk to myself when I wake up. I'm like, okay चलो ये routine follow करना है. उठना, brush किया मैंने, निकल गया. I don't think ये workout. I don't even check if it is your workout or anyone else's workout. मैं आऊँगा जिम में, सब लोग बोलेंगे प्रवीण सर का workout है. I'm like, oh अच्छा प्रवीण सर का है. So I don't even keep my mind ready. I'm like, okay चलो जाना है जिम में. I don't think. So that is an important part, that you don't overthink your workout or your morning plan. Just make it a lifestyle. Yeah, just walk into the gym. I'm like, that really works, because there are a lot of times that, you know, because of the long days and your long working hours, even I get tired, you know, but no matter what, you just start lifting some weights, and about within 5 or 10 minutes you get the rhythm of doing for more, walking towards more workout, and then you're in the flow of the workout, and you just get it done. Okay, that sounds amazing, man, and thank you so much for being here. What's your take on, so you must have done gymming also in the past, I'm sure about it, or this is the place you started working out for the first time? This is the place I mean, जैसे ही मैं यहाँ shift हुआ, I was like, I want to join some. तो आपने कभी gym किया आपने? No. You never gymmed, okay? Like I have gymmed, but not CrossFit. Not CrossFit. What's your take on, what's your understanding on, say, doing a group class? Now you're doing a group class program. Right. You have multiple people around you, and everybody's trying to push, and I always get to see, now you even try to push other people at the same time. Those people also, like for example, say Vidushi or Namita, those people, you have a community around yourself, among yourself, and it gets you a little push to do it. Even I love to work out when I'm doing CrossFit. It's not an easy thing. So whenever I do CrossFit, I make it a point that it's around near the class timing. You know, 7 बजे या 8 बजे के आसपास ही मैं करता हूँ हमेशा. So what's your take on doing the gymming? Like which is individually, आप जिम में जाते हो, machines use करते हो, और या फिर ऐसे माहौल में आप exercise करते हो. What's your take on that? So honestly, group classes are very very helpful to me and very very friendly to me, because मैं भोपाल में था. I knew I used to work out alone, and तुम हफ्ते में से 5 दिन तो कर ही नहीं पाओगे अगर तुम अकेले वर्कआउट कर रहे हो. मुझसे तो नहीं हुआ, मुझसे 3 या 4 दिन मैक्स है. बाद में अकेले नहीं होता है, वो पुश नहीं मिलता है जितना. That's what even I noticed. Yeah, that when we are with our friends, or when we are in a group class with a great coach who is helping you, motivating you, pushing you, तो उसमें तुम like you go a step ahead. जैसे मैं 5 किलो का, जैसे मैंने बताया कि मैं 5 किलो का वेट्स ऐड करता था, but now since I have a lot of friends in my company, I have a great coach, so मैं 10 kg डालता हूँ with their trust कि okay yeah, they will motivate me if I fall down or if I quit. So जैसे अगर मैं 10 का राउंड मारता हूँ,
5 में, तो अगर मैं 10 किलो डालूंगा तो मैं 5 का राउंड मारूंगा. बट इफ आई हैव अ ग्रेट फ्रेंड, दे मोटिवेट मी, चलो 5 हो गया, अभी बस 5 मारना है. तो with that makes a difference. with their motivation we do those 5 reps, and those reps help you a lot. I mean, वो तुमको इतना अच्छा motivation देता है. And honestly for me 7 AM batch is like a kickstart for the day. Yeah, that It's actually like you become more aware and more conscious of what's happening around your surroundings, that when you go to the shoot, when I go to the shoot, I'm like, okay, yeah, I know what I want to do, what I got to do, and you get greater ideas to perform. Like if someone has asked you to do this, you can give 10 other variations of that same thing, and that helps you a lot. So we say na that gym, when you work out, हमारा दिमाग भी थोड़ा बड़ा हो जाता है scientifically. So it is good, it's helpful. Amazing, man. So amazing to have you around. And thank you so much for your time. I wish you all the best and keep spreading the energy that you have. God bless you. Thanks, brother.